los yugos mentales, los dioses falsos que ha tenido tu pueblo. Tú eres instrumento escogido por Dios. Y cabeza para romper cadenas. A veces no entendemos. ¿Para qué nací? Pero todo ser humano debe de saber el propósito por lo cual naciste. Por eso Dios le habla a Moisés. Y Moisés siente su sangre, el dolor por su pueblo. Tú tienes que sentir dolor por tu pueblo. Tú tienes que levantarte como un libertador y decir: Dios, derrama sobre mí una unción sobrenatural para liberar a los que están atados. Hoy se ha cumplido la profecía en este lugar. Hoy Dios ha cumplido el propósito por lo cual ha llamado a ustedes y a él. Cuando Moisés dijo: yo no puedo, soy tartamudo, ya Dios te conoce. Dios sabe tu impedimento, pero lo que a ti te falta, a Dios le sobra. A Dios le sobra. ¿Qué necesitas para cumplir el propósito de Dios? Si lo que a ti te falta, a Dios le sobra. Cuando Dios te forma, te da el poder. 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 Para que logres el propósito de Dios. Y Moisés, cuando descubre la potencia que hay dentro de él, él tiene una varita. La vara representa poder. La vara representa autoridad. La vara representa dominio. Dios no da espíritu de cobardía. Como así está como sino de poder y dominio propio. Lo que está pasando hoy, Faraón tiembla, los demonios tiemblan, las potestades tiemblan, los principados tiemblan. Porque algunos de ustedes क्योंकि आप में से चंद लोग हैं han sido marcados आप मार्क हैं खुदा की तरफ para el Señor खुदा के लिए y se va a cumplir और वो पूरा होगा el propósito de Dios. जो खुदा का मकसद है Se va a cumplir वो पूरा होगा el plan de Dios. खुदा का प्लान Dios da poder, खुदा कुदरत देता Dios है da autoridad खुदा इख्तियार देता है para que el mundo vea कि दुनिया देखे que no estás hablando cualquier cosa, कि आप यहाँ बात नहीं कर रहे sino que hay poder क्योंकि उसमें कुदरत है para hacer milagros, मौजे करने की para abrir el mar, कि वो समुद्र को खोलने की para derribar los muros. कि वो जो स्टैच्यूज उनको गिराने की Es el plan de Dios. ये खुदा का प्लान है Dios te capacita, खुदा आपको भरता है Dios te prepara. खुदा आपको तैयार करता है Estoy listo मैं तैयार हूँ para decirte algo más grande. मैं आपको इससे बड़ी चीज बताने के लिए Dios no te forma en la tierra, खुदा ने आपको जमीन पे नहीं तैयार किया Dios te forma en el cielo. खुदा ने आपको तैयार किया है Lo que Dios जो खुदा está haciendo conmigo hoy जो मेरे साथ कर रहा है
Esto Dios no lo formó en la tierra. उसने जमीन पे नहीं किया, Esto lo formó en el cielo. उसने आसमान पे किया। Dios forma a los hombres खुदा इंसानों को बनाता है, en el cielo. वो आसमान पर। Ese es el plan de Dios. ये खुदा का प्लान है, Formar a alguien किसी को तैयार करना allá arriba. ऊपर। La Biblia dice बाइबल मुकद्दस कहती है que antes de la fundación del mundo, खुदा ने दुनिया को बनाने से पेश कर nosotros estábamos en él. हम उसके अंदर थे। Dios te tomó खुदा ने बनाया y te formó और आपको तैयार किया allá en la tierra. जमीन पर। ¿Y sabes qué hizo? पता उसने क्या किया? Agarró a tu papá उसने आपके बाप को पकड़ा y te puso en los lomos, और उसने आपके कमर में डाला, en los lomos de tu padre. आपके बाप की कमर में रीढ़ के। Cuando tu papá se unió con tu mamá, जब आपकी बाप आपकी माँ से सोया, eso se llama jalá. इसको कहते हैं हाला। Esto jala ये हाला है de lo que está adentro. जो कि अंदर है। Aquí adentro, इसके अंदर, Dios formó al hombre. इसके अंदर खुदा ने Lo mete aquí. वो यहाँ पे तैयार करता Cuando है। está la unión, जब आप यूनियन होते हैं, hay un movimiento एक मूवमेंट होती है donde salen miles de espermatozoides, जहाँ से हजारों निकलती है, pero solamente entra uno, मगर एक ही बच्चे के लिए काफी होता el है। escogido. ऐसे आप चुने हुए हैं खुदा, No puede entrar 3 ni 4, वहाँ पे 3-4 बच्चे नहीं पैदा si होते, no son 3 muchachos. नहीं तो 3 बच्चे होते हैं। Si entran 2, अगर 2 जाते हैं, son 2. 2 बच्चे पैदा होते हैं। Pero si entra uno मगर अगर एक बच जाता है al útero de su madre, अपने माँ के पेट के अंदर, fue el que Dios escogió. इसका मतलब है खुदा ने चुना है। En el camino, अपने रास्ते के लिए todos los otros mueren, सब मर जाते हैं वो, pero solamente entra सिर्फ एक el escogido por Dios. जो कि खुदा के लिए चुना होता है। Pues la mujer está esperando un bebé, जो औरतें बच्चे के इंतजार में हैं, pero todos los otros लेकिन जो दूसरे हैं murieron en el camino. वो मर गए हैं। Cuando tu mamá nació embarazada, जब आपकी माँ पैदा हुई, todos los que salieron जो कुछ भी निकले murieron. वो मर गए, Solamente entró सिर्फ एक ही el formado por Dios. वो खुदा की तरफ से बना हुआ था। Dios te ha formado. खुदा ने आपको बनाया है। Dios te pone en tu padre. खुदा आपको आपके बाप के अंदर डालता है। Dios te pone en tu madre. खुदा आपको आपकी माँ के अंदर Tu डालता है। madre te mantiene por meses. आपका बाप कितने सालों तक आपको अपने अंदर रखे रहता है। Y cuando nace, जब आप पैदा होते हैं tu mamá cree que tiene otro hijo. और वो समझते हैं कि एक और बच्चा है, No solamente es un hijo, वो सिर्फ एक बच्चा नहीं है, es uno que Dios formó. ये वो है जिसको खुदा ने Es una तैयार que Dios formó किया। ये वो है जिसको खुदा ने तैयार किया para cosas grandes, बड़े कामों के लिए, para propósitos तो eternos. खुदा के मकसद है हमेशा के Y लिए। eso sucede और ये होता है, con la vida de un hombre ये एक इंसान की जिंदगी में cuando sabe जब वो जानता है el propósito de तो Dios. खुदा के मकसद को, Tú tienes que conocer आपको जानने की जरूरत el है propósito de Dios खुदा के मकसद को, para poder servirle. ताकि आप उसको सर्व कर सके, उसकी खिदमत कर सके। Moisés sintió मूसा ने en su sangre अपने खून के अंदर el amor por su pueblo, अपने कौम के लिए मोहब्बत को, pero habían ancianos मगर वहां पे थे और लोग, que le dijeron: Moisés, मूसा tú no eres egipcio, तू मिस्री नहीं है, tú eres hebreo. तू यहूदी है, A ti te criaron तुझे तैयार किया, para salvar a tu pueblo. तुझे खुदा ने तैयार किया तो अपनी कौम को रिहाई। Moisés fuiste escogido, मूसा चुना हुआ था, pero cuando Dios le habla, मगर जब खुदा बोला, él dice que él no puede, उसने क्या खुदा से उसने बोला था पहाड़ porque él es tartamudo. क्योंकि मैं तो हकलाता हूँ। Quiero que escuchen esto मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोग को, इस तरह गौर से सुने y no se me ofendan. और प्लीज मुझे बुरा ना मनाना कि मैं जो बात Sí. करने पर करता हूँ। Egipto मिस्र, tiene muchos dioses. Sí, उनके पास बहुत से खुदा हैं, muchos dioses. बहुत से खुदा हैं मिस्रियों के पास, Entonces hay una guerra इसलिए कि जंग हो रही है entre Dios del cielo जो आसमान पे है, con los dioses de la tierra. जो वो खुदा जो आसमान पे है वो खुदा है जो जमीन पर है उनकी, Moisés tiene el Dios poderoso, मगर मूसा के पास खुदा एक आदम है Faraón tiene sus dioses, और फराउन के पास अपने खुदा हैं pero tiene su brujo, और उसके जादूगर भी हैं फराउन के पास, tiene su hechicero. उसके पास अपने जो जादूगरनियां भी हैं। Hay una guerra. अब एक जंग है, Los dos hacen milagros. अब दोनों ही मौजे कर रहे हैं Los brujos hacen milagros. और जादूगरनियां ही मौजे, Satanás hace milagros. अबलीस भी जादू मौजे करता है, Pero los milagros del diablo मगर जो अबलीस के मौजे होते te हैं destruyen. वो आपको बर्बाद करते Pero हैं, los milagros de Dios मगर खुदा के मौजे te levantan, आपको खड़ा te करते हैं, edifican, आपको te क्या- bendicen. आपको क्या करते हैं? आपको बरकत देकर आपको खड़ा करते हैं। Pero la gente busca milagros और लोगों ने क्या चुना?
hechicera, जो जादूगरों के पास जाए que le lea la mano, कि उनको अपना हाथ दे, que उनको हाथ la पकड़े, divina le hable. कि वो बोले। Usted se ha maldecido. आप अंधे हैं किस्म के, Eso trae maldición. ये लानत लेके आती हैं। Faraón está maldito फराउन जो के लानती है, porque buscó brujo, क्योंकि उसने जादूगर और जादूगर buscó hechicero, उसने हाथ देखने वालों को चुना। pero llegó el que Dios formó. मगर वक्त आ गया कि खुदा ने को तैयार किया Va a haber una guerra, कि अब ये जंग हो जाए, guerra espiritual, जो रूहानी जंग हो, guerra de poder, जो जंग जो कुदरत की ताकत की हो, guerra de autoridad. जो इख्तियार की हो। Entonces le dice Faraón, इसलिए फराउन ने कहा, ¿quién te envió? किसने तुझे भेजा है? Yo soy el que soy. मैं हूँ जो हूँ। Él me envió. और मूसा ने कहा, मैं जो हूँ वो हूँ ने मुझे भेजा है। Faraón dice, फराउन ने क्या कहा? yo no lo conozco. मैं तो नहीं उसको जानता। Él es conocido. वो तो यहाँ पे जानते ही El नहीं। Dios que tú lo conoces जो खुदा को तू जानता है, es el verdadero. वो जिंदा खुदा है। Gloria a Dios, aleluya. Hay lo que los hombres inventaron, और दूसरे जिनको इंसानों ने बनाया है, pero no tienen el poder. मगर उनका कुदरत नहीं है। Tienen un poder उनके पास एक कुदरत है engañoso, जो कि एक हद तक है, destructivo, जो कि थोड़े इख्तियार की है, para bloquear tu mente. जो आपके जहन को रोक सकें। Pero él dice, ¿quién es ese Dios? और फराउन कहते हैं, ये कौन सा खुदा है? Yo soy el que soy. मैं जो हूँ Yo no entiendo eso. मैं नहीं समझता इसको। ¿Cómo así? क्यों इस तरह? Y le dice Moisés, और मूसा ने कहा, él me dijo que soltaras al pueblo. उसने मुझे कहा कि तू मेरी कौम को रिहाई दे दे। Los profetas जो नबी हैं, tienen poder उनके पास कुदरत है para que el pueblo कि कौम sea liberado. कि वो रिहाई पाए। Vengo como profeta de मैं Jehová आज यहोवा के प्रॉफिट के तौर पर para decirte आपको बताने के que लिए, tu generación आप एक नेशन habrán millones और मिलियंस होंगे que serán libres कि वो रिहाई y पाए, le servirán a Dios. कि वो जानेंगे आपके Vamos, un aplauso al Señor. Le servirán a Dios. Dios no necesita a muchos खुदा को बहुत से लोगों की जरूरत नहीं para है hacer cosas grandes. कि वो बड़े काम कर सके। Dios necesita a